group 7, and now we are moving towards group number 8, right, Bacho? This is the next group that we need to discuss, group number 8. So as we all know that group number 8 is actually known as group number 0. Why we call them group 0? The reason is because they have 8 electrons in the outermost shell and they don't need to lose and gain electrons. That is why they have 0 charge on them. 0 charge. There is no charge on them, right? No charge. They will not lose or they will not gain electrons to become ion. They are neutral. They don't want to be an ion, right? And also one more problem is here that we have different several members over here: helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. These are 6 elements of this group, and all of them are having 8 electrons except helium. So this group 8, we know that group number indicates the number of valence shell electron, but this statement is not completely for group 8 because all the members are having 8 electrons definitely, but except helium. Until and unless you are using the exception of helium, the statement is not correct. Many times in exams, they disturb you by this statement. They try to use this statement in MCQs. They say that group 8 members have 8 electrons in the outermost shell. And you all think about this, that this is right. But Bacho, you need to keep remember this. This is not true until and unless that there is an exception of helium. You need to use the exception of helium in the statement, then this statement is going to be true. So you need to say that all the group 8 members having 8 electrons in the outermost shell, that is fine. But the correct statement is having 8 electrons in the outermost shell except helium. Without the word except helium, the statement is not true. Got it, every one of you? Yes, sir. So that is why we are going to consider this group in the modern periodic table as a 0 group, right? Just because of the charge. They are inert. They don't want to gain or lose electrons to complete their octets or duplets. They are already having complete octets and only one shell and complete duplets, right? You can see this, that helium having 2 electrons in the outermost shell, and that's fine. It has complete duplet, right? And if you talk about neon, so it is 2,8, so it have complete octet. If you talk about argon, so it is 2,8,8, so it has complete octet. That's like this, right, Bacho? So all the gases or whatever the element present in this group, they have complete octets and they have complete duplets. So they don't want to lose or gain electrons, or they are not going to form any type of ion. But the rest of all members of the periodic table wants to follow their electronic configuration. For suppose if we talk about sodium, so sodium has 11 electrons total in it. It is 2,8,1, right? So sodium loses its last electron to just follow the electronic configuration of group 8. It is now going to follow the neon, right? Same as it is if you talk about for suppose phosphorus. So phosphorus has 15 electrons in the outermost shell. So it has like 2,8,5. So it received 3 electrons to become 2,8,8. And this is actually the resemblance with argon gas. Electronic configuration, right, Bacho? Yes, sir. So rest of the all molecule, rest of the all element in the periodic table, they just want to have the same electronic configuration as noble gases have or inert gases have, because they are stable. So every element in the periodic table wants to be stabilized as group 8 members are, right? They have 8 electrons in the outermost shell, so they are inert in nature. So you can say that these elements are inert. These elements are inert, or you can say that they are unreactive because they have 8 electrons, or you can say because they have complete duplets or octets, because they have
complete tuplets and octets. Right, बच्चों? Yes, sir. Any problem to any one of you? No, sir. बच्चों, you need to keep remember that. जी बेटे. सर क्या कहते हैं, मुझे सिर्फ एक चीज में प्रॉब्लम आती है ये पीरियोडिक टेबल के, क्या कहते हैं, अगर कोई ऐसा हो जिसमें सपोज करें अब 32 वो है एट इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटर इसके शेल्स में, तो सर उसकी क्या कहते हैं हम कैसे करेंगे, वो मुझे समझ आती है. बेटा देखो, पहली बात तो आपको याद रखना है कि आपकी पीरियोडिक टेबल में यू जस्ट हैव मैक्सिमम 20 एलिमेंट्स जो कि वो आपसे पूछ सकता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए. यानी कि वो अगर आपसे बोलेगा कि भाई सारे शेल्स बनाओ, कि भाई मतलब पहला भी बनाओ, दूसरा भी बनाओ, तीसरा भी बनाओ, चौथा भी बनाओ, सारे शेल्स बनाओ, तो मैक्सिमम वो 20 एलिमेंट्स तक आपसे पूछ सकता है, इसके अलावा नहीं पूछ सकता. और अगर 20 के अलावा वो किसी एलिमेंट के बारे में पूछे जिसका प्रोटॉन नंबर 20 से ज्यादा होगा, तो फिर वो सिर्फ लास्ट शेल पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा. फॉर सपोज 35 उसने बोला, 35 एक एलिमेंट है, उसका प्रोटॉन नंबर है 35, इसका आप आइन बना के दिखाओ. So you can see this 35 is the part of group 7. सही है ना? तो आपको पता होगा कि ये जो 37 वाला है, इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे भाई? 7 electrons. So it will receive 1 electron and become -1 charge. तो जितने भी elements 20 से ऊपर वाले होंगे तो वो उसका सिर्फ बैलेंस शेल पूछेगा और उसको आप ग्रुप नंबर के थ्रू कर सकते हो. डेफिनेटली वो 21 और 30 के बीच वाला नहीं पूछेगा. उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह ये है कि बिकॉज दे आर ट्रांजिशन मेटल एंड दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी लर्न बाय यू इन ए लेवल्स. राइट? यस सर. और सर अगर ये ट्रांजिशन मेटल से हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं पूछेगा वो, इवन कि वो लास्ट शेल भी नहीं पूछेगा आपसे. ओके सर, ठीक है, थैंक यू. ठीक है. Now, बच्चों, you need to keep remember that because they are inert, they are unreactive, they don't want to lose electrons and they don't want to gain electrons. They are already completed. They have already completed shells, so they are always monoatomic in nature. They are always single in state, right? हमेशा अकेले होंगे. हीलियम हमेशा He की फॉर्म में होगा, Ne हमेशा Ne की फॉर्म में होगा, कभी भी Ne2 नहीं होगा, कभी भी वो Ar2 नहीं होगा, कभी वो He2 नहीं होगा. They are always monoatomic in nature, right बच्चों? Yes, sir. यस सर. Then they all are gases. So you need to say that they all are gases. And one more important thing about them are they are all colorless gases. They are all colorless gases. Even they are gases, but they all are colorless gases, right? And you need to keep remember them that they have low melting point, boiling point, and densities. They have low melting point, boiling point, and densities as well. Right, every one of you? Right, sir. Any problem to any one of you? So you can ask. No problem, sir. Okay, so these are the properties that you need to learn. These are the physical properties. And then if you talk about trends, so bachcho, you need to remember this: when the number of carbon increases, definitely the bonding increases. So, sorry, when the number of protons and neutrons are going to be increased, so the mass is going to be increases of the elements, right? So you can say that melting point, boiling point, and densities. These three things are going to be increases down the groups, right? Right, bacho? Right, sir. Any problem? This is the trend. And also one more thing, bacho, can you please tell me if you talk about the reactivity of group 1, if you talk about the reactivity of group 1, bacho, alkali jo metals से आपके पास, this is group number 1, बच्चों उसकी reactivity down the group क्या हो रही थी? Increase हो रही है. इंक्रीज. We that reactivity जो है इनकी down the group क्या हो रही थी बच्चों? Increase हो रही थी. And if you talk about halogens बच्चों, तो halogens are actually group number 7. और अगर हम इसकी बात करें तो इनकी reactivity down the group क्या हो रही थी बच्चों? Reactivity down the decrease हो. और अगर हम group 8 की बात करें तो बच्चों इनकी reactivity क्या होगी down the group? Increase या decrease? Increase. Increase No होगी, change. decrease होगी?
But you need to keep remember that they are not reactive. They are not reactive. So definitely there is no trend in the reactivity as well, right? They already have 8 electrons in their outermost shell. So why they react with anyone else, right? Everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Then we have some uses related to these elements. So can any one of you, can you please tell me what is the use of helium gas? They used to fill balloons. Yes, Air balloons, yes, hot air this balloons. is used in weather balloons. Right, good job. And what about neon, Bacho? What is the use of neon gas? Yeah, Sir, sir, it is used advertisement in lights, bulb lights. Yes, you can say that it would be used in signboards, right? Light signboard, lightning signboards. ठीक है? Different colors की lightning आपके पास इसमें use हो सकती है. And what about the use of argon gas, बच्चों? Sir, it is also used in lights, I guess. Yes, और कोई बता सकता है इसका कोई अलग use? Sir, yellow bulbs, I think. Yellow bulbs. बच्चों, can anyone tell me कि आपके पास ये जो आर्गन होती है ये एटमॉस्फेयर में कितनी मौजूद होती है? 0.08, sir. 0.9%. Very minute amount, very minor amount. Very minor amount. You can say that it is almost the major part of 1%. आपके पास जो 1% एयर बचती है ना, अदर देन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसका जो मेजर पार्ट होता है आपके पास क्या होता है, वो आपके पास आर्गन कंटेन वो 0.7% समवेयर होता है, तो वहां पर ये यूज होती है, ठीक है ना. So you can say that argon is used in welding, right? This is one of the main use of iron. It is used in welding purposes, right? ये आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है भाई. चलिए, तो वैसे आपको एक बात बता दूं कि these 3 uses are not in our syllabus right now. अब हमारे syllabus से इसके uses हट चुके हैं, but क्योंकि ये सिर्फ 3 छोटी-छोटी सी बातें हैं तो आपको याद रख लेनी है. हो सकता है कभी किसी MCQs में ये पुराने सालों के MCQs में काम आ जाए आपके, या अगर किसी डिफरेंट फॉर्म में वो आपसे पूछ लें एग्जाम में. So you at least need to know this, right बच्चों? Yes, sir. Chale. Now we are moving towards the last part of this chapter, which is known as बच्चों transition metals, right बच्चों? We need to know Yes, this, that this is group 1, this is group 2, and the center part. This is the center part. You need to keep remember bachcho 3, 4, 5, 6, 7, and 8. This is actually the periodic table, and this part is actually transition metals part, right bachcho? This is the block for transition metals. You need to keep remember this. It would be important in MCQs. You need to keep remember कि भाई transition metal की जो properties होती हैं उसको use करते हुए आपसे वो पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल होगा. सो यू नीड टू कीप रिमेंबर कि भाई इस ब्लॉक में जो एलिमेंट लिखा हुआ होगा उसको आंसर करना होगा. सही है, ठीक है बच्चों? चलें, हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है बच्चों? यू नीड टू कीप रिमेंबर वी हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि आपको इनसे रिलेटेड याद रखनी है, बट उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है दैट वी हैव सम यू कैन से दैट difference between the transition metals and alkali metals. ये आपको तंग कर सकता है पेपर में. So you need to be aware about this, that transition metals and alkali metals इन दोनों में थोड़ा बहुत difference मौजूद है. So let's see. If you talk about alkali metals, बच्चों alkali metals are which type of metals? They are soft metals, right? They can be cut by knife, right? Yes, sir. And transition metals are actually very hard metals, right? They cannot cut by knife. Got it, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. If you talk about alkali metals, so they have low melting point and boiling point. And if you want to just imagine that how low the melting point and boiling point they have, so actually the melting point of sodium is very low. You can imagine this, that it is 98 degrees Celsius. It is just for your information.
that you can imagine that how low the melting point of sodium is, right? And if you talk about the melting point of transition metals, so they have high melting and boiling points. They have high melting and boiling point. And if you want to consider this, कि वो कितना high हो सकता है, if you want to just imagine this, if you just want to make an image in your mind कि यार अगर पेपर में अगर मुझसे पूछ रहे तो मुझे आइडिया हो जाए देखते ही. So melting point of iron is somewhere 1538 degree Celsius. You can see this. कितना difference है melting point में, कितना ज़्यादा, मतलब almost somewhere 1440 या 60 का कोई है आपके पास difference है. So it's a very huge difference. And if you talk about densities, बच्चों, so transition metals have high densities, right? They have high densities. And if you talk about group 1 metals, so they have low densities. We know that they can even float on the surface of water. And if you want to imagine the density difference, so the density of sodium, if you talk about density of sodium, बच्चों, so it is somewhere 0.91 gram per centimeter cube. पानी की 1 होती है. So it can be float on the surface of water. And if you want to imagine the density of iron, so it is somewhere, density of iron is somewhere like it will be 6.98 gram per centimeter cube. So you can say that बच्चों कि अगर आप इसको पानी में डालते हो तो definitely ये पानी में dip हो जाएगा और नीचे जाके bottom में settle down हो जाएगा. Is that right, बच्चों? Yes, sir. So Right, these sir. are the 3 different physical properties जो कि आपके पास deviation है. दोनों ही metals हैं. Alkali metals are also metals and transition metals are also metals, but there is a difference in their physical properties. And they are the difference of just 3 properties: the melting point, boiling point, and the state. They are soft metal and they are hard metal, and the rest of the properties are common, right? So there are some common physical property between these 2 guys, or these 2 types of metals, and they all are ductiles. They all are ductile. They can be cut into wires. They all are malleable. They can be you can say that can be shaped in different different shapes, right? They can be hammered out. They can change their shape after applying pressure on them, right? Or you can say that that they all are conductor of electricity and heat. They are best conductors in the world. If we talk about metals, the metals are the best conductor, best of best, right? Is such a कोई conductor हो ही नहीं सकता metal से अच्छा. They are the good conductors of electricity as well. And if you talk about their appearance, so they are shiny as well. So we have 4 other properties जिसके बारे में आप बात कर सकते हो. ये दोनों के लिए मौजूद है. Got it, every one of you? Got it, sir. Got it, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So let's write one skill test. बच्चों, if you talk about a skill test, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पर जर्नल लिखवा दिया है. अब बहुत सारे बच्चे आप में से इसको याद करेंगे और हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसमें सोचे भी ना कि सर ने क्यों लिखवाया है, फजूल में लिखवाया है, शायद बेकार सी बात लिखी हुई है. लेकिन आप जरा सोचें कि ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है. फॉर सपोज इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस, राइट डाउन एनी वन डिफरेंस बिटवीन सिल्वर एंड पोटेशियम. सो आप सोचें इन दोनों को, अगर मैं इन दोनों में एक डिफरेंस लिखना चाहूं तो आप क्या डिफरेंस लिख सकते हैं बच्चों? Potassium is a soft metal, while silver is a hard metal. Yes, you can say that silver is a hard metal while potassium is soft metal. And any other physical property that you want to add over here, you can say that it has a low melting point and it has high melting point, right? You can even say that it is having high density and it will be having low density. You can write the difference between these 2 elements, right? So वो जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया है, this is actually not the difference of 2 classes. It is actually the difference of metals. वो आपसे in the form of metal सवाल पूछ सकता है. You need to keep remember this. They can even ask you a question कि भाई write down any one similarity between these 2. वो आपसे बोले यार कॉपर के अंदर और सोडियम के अंदर एक सिमिलैरिटी बताओ, तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे दोनों मेटल है, नंबर कट जाएगा आपका, ठीक है ना? वो बोलेगा कॉपर और सिल्वर के अंदर, कॉपर और सोडियम या लिथियम के अंदर एक सिमिलैरिटी बताओ. आप क्या बताओगे? आप बता दोगे सर ये दोनों ग्रे होते होंगे. ऐसा नंबर कट जाएगा, ठीक है ना? यू नो दिस, आपको पढ़ा दिया गया है. You have 7 properties to remember, 7 to 8 properties to remember. उसमें से 3 में डिफरेंस है, 4 सिमिलर है.
तो उन चारों में से कोई फिजिकल प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो. You can say that even if I give you the copper and sodium comparison, if I'm giving you like iron and lithium comparison, for suppose if I am giving you gold and potassium, कोई भी मैं आपको एक ट्रांजिशन मेटल और एक alkali metal दे दूं, so you can say that the similarity between these two metals is they are the best conductor of electricity. That's fine. You can say that they are shiny, they have a shiny appearance, right? Can you say this, bachcho? These are the physical properties that you need to keep remember, right or not? Yes, sir. Yes. Any one of you, इसमें नंबर नहीं करना चाहिए, ये बहुत सिंपल बात है. सही है. अगर ये याद करके आप आंसर नहीं दे सकते तो इसका मतलब है आप कुछ नहीं कर सकते. वो मुश्किल चीजों से नंबर कटवाने वाले लोग मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू जो आसान चीजों को नंबर कटवाते हैं. तो आप लोगों ने आसान चीजों में नंबर नहीं कटवा रहे हैं, मुश्किल चीज जो है उसमें नंबर कटवाओ. आसान चीज को तो सिंपल याद करके लिखना ही है ना, तो वो उसमें केमिस्ट्री का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है. आप उसमें केमिस्ट्री को ब्लेम ही नहीं कर सकते हो कि भाई केमिस्ट्री तुम बहुत मुश्किल तरीन सब्जेक्ट हो, आप नहीं बोल सकते उसको. ठीक है ना. तो जो आसान चीज है उसको भी अगर आप गलत करें तो दिस इज नाउ द वन थिंग कि मुझे क्लेम करना चाहिए कि बच्चों आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हो केमिस्ट्री के साथ. केमिस्ट्री में बहुत आसान सी चीज थी, ये याद करके लिखना था खाली, आपने नहीं लिखा. Right. So these are the very simple things. You need to be aware about these things. You need to keep remember while you are answering some questions regarding to metals. Got it, बच्चों? Yes, sir. चलें आगे चलते हैं. These are the physical properties. Now let's move towards the chemical properties. अभी देखिए ये भी बहुत बड़ा मसला है बच्चों के साथ ना. अभी जो मैंने ऊपर लिखवाई है ना, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी. ये सिर्फ यही है फिजिकल प्रॉपर्टीज. These are the physical properties. अब देखिए मैंने ऊपर हेडिंग में डाल दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें लिखेंगे ट्रांजिशन मेटल्स फ्रॉम कलर्ड कंपाउंड. हालांकि मैं अभी नीचे बता दूंगा कि वो केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन वही लिखना है आप लोगों ने. बच्चों ने बहुत सारे बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं. फिर भी वो लिखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल वर्क एज अ कैटलिस्ट. फिर भी वो लिखते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. यू नीड टू कीप रिमेंबर बच्चों, ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. वो केमिकल पूछे तो केमिकल लिखो, फिजिकल पूछे तो फिजिकल लिखो. हम क्या समझते हैं यार, ट्रांजिशन मेटल की जो 3 प्रॉपर्टी सर ने बताई थी ना केमिकल वाली, वो सबसे दुनिया से अलग है. वो एमसीक्यूज में बार बार पूछी जा रही है कि भाई यार कलर कंपाउंड कौन सा एलिमेंट बता रहा है, बताओ. वो आपने जो है ट्रांजिशन मेटल के ब्लॉक के अंदर आइडेंटिफाई कर दिया, ये वाला बना रहा होगा. कैटलिस्ट के तौर पर कौन काम कर सकता है, ये कर सकता है. ठीक है, वो आपने सब लगाना है, याद करना है आपने, वो इंपॉर्टेंट है. बट ये डिफरेंस लाजमी रखना है कि भाई फिजिकल अलग है, केमिकल अलग है. ठीक है. सो वी हैव 3 केमिकल प्रॉपर्टीज एक्चुअली जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा. ठीक है ना. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ये आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज में बेतहाशा इस्तेमाल होगी. केमिकल प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 1 is transition metals have variable oxidation state. They have variable oxidation state. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि if you talk about group number 1, so they all have +1 charge. If you talk about group number 2, so they always have +2 charge. If you talk about group number 3, so they always have +3 charge. But metals जो होते हैं आपके पास transition metals, उनका ऐसा सीन नहीं होता है. उनमें क्या होता है कि iron is a transition metal. It can form +2 charge or it can even form +3 charge. अगर ये क्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा तो it would be FeCl2, और अगर इसके साथ बनाएगा तो it would be FeCl3. और जब आप इसका नाम लिखोगे तो आपको मेंशन करना पड़ेगा it is iron, because of the charge of +2 you need to write in Roman it is iron 2 chloride. It is iron 2 chloride. पूरे सिलेबस में अगर आपसे कहीं पूछता है वो कि ट्रांजिशन मेटल का कंपाउंड है, उसका नाम लिख दें आप इसमें ना, तो आपको ये ट्रांजिशन स्टेट लिखना पड़ेगी इसमें 2 जो लिखा हुआ है. इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप Fe2Cl बनाओगे कंपाउंड. बच्चे ये गलती करते हैं. ठीक है ना. इसी तरह इसका नाम क्या होगा, आयरन 3 क्लोराइड. ठीक है. मैं बहुत सारे बच्चों को नाम बोलता हूँ कि आपके पास है कॉपर 2 सल्फेट. मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चों आपके पास है कॉपर 2 सल्फेट, तो वो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वो लिख देते हैं Cu2SO4, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग. कॉपर 2 सल्फेट का मतलब ये है कि इस कंपाउंड में जो कॉपर है उसका चार्ज है 2+, एंड सल्फेट का चार्ज होता है 2-. When the charges are opposite and the number are same, we just combine them together. So the formula is CuSO4. This is the right one. कॉपर 2 सल्फेट का हरगिज मतलब नहीं है कि वहां फॉर्मूले में आपने 2 लिखना है. कॉपर 2 सल्फेट का मतलब ये है कि this 2 is actually oxidation state of transition metal.
which is necessary to mention over there, otherwise the formula is wrong. For suppose, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास है आयरन ऑक्साइड, आपके पास क्या है, आयरन ऑक्साइड। आपसे पूछा गया एग्जाम में, कोई काम था, आयरन ऑक्साइड आपने लिख दिया। नाउ हाउ कैन बी लाइक, ये हम इसको डिफरेंशिएट किस तरह कर पाएंगे, एग्जामिनर किस तरह डिफरेंशिएट कर पाएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 भी होता है, ऑक्सीजन का हमेशा 2- होता है। तो जब ये कंपाउंड बनेगा तो दिस इज एक्चुअली Fe2O3, और जब ये कंपाउंड बनेगा तो इट इज FeO। सो वी हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा भाई आप लोग पहले वाले की बात कर रहे हो या दूसरे वाले, तो वो काट देगा, ठीक है ना। सो यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस, जब कभी भी किसी भी ट्रांजिशन मेटल का नाम लिखोगे तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आयरन 2 ऑक्साइड बच्चों, और दिस इज आयरन 3 ऑक्साइड। गॉट इट एवरी वन ऑफ यू? Yes, sir. Any Yes, sir. problem? So you can ask. चले नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। सर नेक्स्ट की बेटे, सर अगर हमें क्या कहते हैं नॉर्मल आयरन का कंपाउंड दिया होगा जैसे Fe सिंपल कंपाउंड, और हमें कहा होगा इसका आयन बना के दिखाएं, तो हम Fe2+ वाला दिखाएंगे Fe3+? बेटा उसमें वो मेंशन करेगा। अगर आपको वो आयरन देता है सिंपल, और वो कह रहा है कि भाई ये दिस आयरन इज गोइंग टू रिएक्ट विद HCl, तो वो कभी भी नहीं बोलेगा राइट डाउन द इक्वेशन फॉर दिस। वो आपको हमेशा बताएगा व्हेन आयरन रिएक्ट विद HCl इट इज गोइंग टू फॉर्म आयरन 2 क्लोराइड। तो आप इसकी इक्वेशन बना के दिखाना, तो फिर आप बता लोगे इट इज Fe+2HCl गिव यू FeCl2NH2 गैस, राइट। वो कभी भी आपसे ऐसा सवाल पूछेगा ही नहीं ट्रांजिशन मेटल से। अगर वो इक्वेशन बनाने के लिए देगा तब भी आपको वो ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, कुछ भी वो देगा ट्रांजिशन मेटल से रिलेटेड आपको वो बताएगा, कुछ ना कुछ आपको क्लू देगा उसके अंदर, ठीक है। ठीक है सर, ओके अंडरस्टूड। Now the second chemical property is they form colored compounds. क्या बनाते हैं भाई ये? They form colored compounds. जब ये compounds बनाते हैं, अकेले नहीं, मतलब आयरन रखा हुआ है तो it is not colored, लेकिन अगर आपके पास आयरन 2 क्लोराइड रखा हुआ होगा, this is salt of this is a compound of this, so it should have a green color. इसका कलर कैसा होना चाहिए? ग्रीन कलर होना चाहिए, क्योंकि ये आयरन 2+ है। आयरन 2+ का कलर ग्रीन होता है, ये आपको वैसे भी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटाइंस में याद करना होगा। देन अगर आपके पास आयरन 3 क्लोराइड होगा, सो इसका कलर होगा, इट मस्ट बी समवेयर रेडिश ब्राउन, ये भी आपको याद करना है। Same as it is if you have copper 2 sulfate, so it is also the part of our syllabus, it is somewhere blue, right, in color. It is blue in color, right? If you have a salt of chromium, for suppose if you have the salt of chromium 3 chloride, for suppose, so it is also the color of green type, right? It's somewhere green in color. So these are the transition metal compounds, and you need to keep remember the color of these 4. These are the part of our syllabus, and we will discuss this in identification of cations. Got it, every one of you? Yes, Yes, sir. sir. Yes. We have one last chemical property of transition metals, that they act as a catalyst. They act as a catalyst. They act as a catalyst. And what is catalyst? Catalyst is one of the substance which speeds up the reaction, right? This is the substance which speeds up the reaction. क्या करता है बच्चों? It speeds up the reaction. Reaction को fast करता है, right? Got it बच्चों? Yes. Yes, sir. और ये कैसे करता है? By lowering the activation energy. By lowering the activation energy. Activation energy is the type of energy which is required to start any reaction. So the amount of energy which is required by the reaction to start, वो उस energy को कम कर देता है, reaction जल्दी start हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से आपके पास आपकी cost save हो जाती है, आपकी energy save हो जाती है, आपका time save हो जाता है, ये तीनों चीजें आपके पास save हो जाती है, right? Yes, sir. Also, the mass of catalyst remain unchanged. It will be unchanged in end, right? The mass उतना ही रहता है जितना आपने शुरू में डाला था, यानी यूज्ड अप नहीं होता। ये यूज नहीं होता केमिकल रिएक्शन में, हाँ, बट
ये टेक पार्ट जरूर करता है, खर्च नहीं होता। Got it, every one of you? तो ट्रांजिशन मेटल ज्यादातर जो है आपके पास एज अ कैटलिस्ट वर्कआउट करते हैं, और उसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे सिलेबस में मिलती हैं। एक सिलेबस में हमारे पार्ट है, एक चीज है हमारे सिलेबस में जिसका नाम है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बनाएंगे इस प्रोसेस में फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का ये चैप्टर है, और इसके अंदर आपने यूज किया है आयरन कैटलिस्ट, एंड यू कैन सी दिस आयरन इज वन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल, राइट बच्चों? Right, sir. इसी तरह हमारे हमारे पार्ट है हमारे सिलेबस का कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, और ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वी नीड टू डू फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस, और इसमें हम यूज करते हैं कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ट्रांजिशन मेटल यूज करें, हम उनके सॉल्ट्स भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें हम यूज करते हैं कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल, एंड विच इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, V2O5। You can name this as vanadium pentaoxide, right बच्चों? Yes. We have one more process in our syllabus, that is manufacturing of margarine. Manufacturing of margarine, और इसमें हम लोग यूज करते हैं निकल catalyst, and it is also one of the transition metal। और हमारे सिलेबस में है एक कैटालाइटिक कन्वर्टर। कैटालाइटिक कन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर हम लोग यूज करते हैं कार्स में, ठीक है ना? और इसके अंदर यूज होता है रोडियम या प्लेटिनम का कैटालिस्ट, राइट बच्चों? हमारे सिलेबस में एक नई चीज ऐड हुई है जिसका नाम है फ्यूल सेल, और इस फ्यूल सेल में भी हमने प्लेटिनम कैटालिस्ट यूज किया है। Got it, every one of you? So we have these some examples that are part of our syllabus, जो कि हमें अलग-अलग चैप्टर में अलग-अलग पढ़नी है, बट क्योंकि अभी ट्रांजिशन मेटल्स की बात आ गई है, तो ये इस तरह के एमसीक्यूज वो पूछ सकता है पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के अंदर भी, तो इसलिए मैंने आपको ये सारी दिखा दिए हैं। Is that all right, every one of you? Yes, sir. You can take a picture of this, you can make notes about this. This is very important. Talk about the importance of this topic or this chapter. So you can imagine the importance of this chapter by the number of MCQs in this worksheet. If any one of you have my this set, so you know this case can there almost 100 MCQs मौजूद हैं इस topic से related. So this is a very much important topic in terms of MCQs. So let's talk about the MCQs, and I am going to start with the MCQ number 1. So just look at over here, but what the question is saying. Question is saying that in the periodic table, how many periods are needed to accommodate the elements of the atomic number 1 to 18? You have periodic table when you are when you are going to do this MCQ. So you can see this, the element which is the 18th element, which is argon. It is going to be last like this, and you will see that neon on it. You will see helium on this. So you can see this. This is the period number 1. This is the period number 2, and this is the period number 3. So if you focus over there, so you will see that for the 18 elements, there should be at least 3 periods to accommodate all these elements in the periodic table. Is that right, Bacho? Yes, sir. Then in the second MCQ, you can see over here what is that this MCQ is saying, which statement is correct about sulfur. Atomic number is 16. So we know that 16 proton number is saying that it has 16 electrons as well in a neutral form. So it is 2, 8, 6. This is the electronic configuration. And if you want to complete the state, complete shell, so it must receive 2 electrons and become -2 charge. And we're saying over here, sulfur can form the ion as 2-. Then absolutely right statement. Then sulfur dissolved in water to form sulfuric acid. This is not fine. Sulfur form ionic oxide, that is not fine. Sulfur dioxide and sulfur trioxide both are covalent compounds because both are non-metals. Sulfur will react with metals to form S6+. That is also not right. Whenever sulfur reacts with metals, it must receive electrons and become 2- charge. The right answer will be 2-. Is that right, बच्चों? सर जो Yes, सल्फर yes. डाइऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं ना?
सल्फर पहले कन्वर्ट होगा सल्फर डाइऑक्साइड में, then this sulfur dioxide should convert into sulfur trioxide. Once this is sulfur trioxide you can dissolve this into the water and can have sulfuric acid, right bache? Right, sir. Okay, then a lump of element X can be cut by knife. तो बच्चों क्या आंसर होना चाहिए? क्या मुझे आगे पढ़ने की जरूरत है? Which Potassium, sir. element? Yes, it is from group number 1. Right, you are absolutely right. Then chlorine is passed into the separate sample of aqueous potassium iodide and aqueous potassium bromide. In which solution is their color change? बच्चों बताइए, chlorine is more reactive than bromine or iodine, or yes or not? Yes, sir. Yes. So definitely bromine and iodine both are going to be displaced by chlorine, and there would be a color change, like a brown color appears after the displacement reaction, right or not? Yes. Right. Yes. So what should be the answer of this MCQ? It should be C. it's A, bete. In Yes. both of them, KCl form, and in this iodine gas liberate and in this bromine gas liberate, and both are colored gases or both are colored liquids. So you can say that in both of them, color change would be seen, right or not? ये वाला फोर्थ वाला आप एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा से? बेटा देखो, क्लोरीन अगर आप पास करोगे पोटेशियम आयोडाइड में से, तो आपके पास बनेगा पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन. सो दिस वुड हैव अ कलर चेंज, राइट? यहाँ पर आपको कलर चेंज नजर आएगा. आयोडीन का कलर अगर आप ब्राउन लिखते हो तो भी चलेगा, अगर आप पर्पलिश ब्लैक सॉलिड लिखते हो तो भी चलेगा, बट कुछ भी हो कलर तो आएगा, है ना? इसी तरह क्लोरीन को अगर आप पोटेशियम ब्रोमाइड में से पास आउट करोगे तो अगेन KCl will form and bromine gas would be liberated. अगर आप इसको लिक्विड फॉर्म में लिखोगे तो it would be reddish brown liquid. अगर आप gaseous फॉर्म में लिखोगे तो it would be brown gas. In both of the condition you will see the color change, right or not? Yes sir, right. So that is why the right answer would be A. Got it? Sir, जी बेटे. Yes sir. can you explain question number 1? Question number 1 is very simple. If you have periodic tables, you can see this, that hydrogen is 1, helium is 2, then all the 18 elements are going to be accommodated in at least 3 periods, right? So it requires 3 rows of the periodic table to adjust all starting 18 elements, right? Yes. शुरू वाले जो आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं उनको आपको अगर accommodate करना है periodic table में, so you must require at least 3 rows of the periodic table. ठीक है ना? Now we have MCQ number 5. Just look at over here why I told you about like imaginary melting points of metals and ionic compounds all the time. This is just because of these type of questions. You can see this. That rubidium is group 1 of the periodic table. What is the properties of rubidium chloride? Now you know that rubidium is from group number 1, so it is +1 in charge, and chlorine is from group number 7, so it should be -1. So the compound between these two should be RbCl, right, bacho, or not? Yes, Yes, sir. So it means these two cannot be the answers. पहला वाला आंसर हो सकता है या तो दूसरा वाला आंसर हो सकता है. हमें एक कॉन्सेप्ट से ये पता चल गया. Second concept is, you know that this is ionic compound, right, bacho? Yes sir. Right, Ionic sir. compounds are soluble in water and they have a high melting point. Is this right or not? Yes, Yes, sir. sir. भी हो So जाएगा. it means that the right answer should be B B, part. right? Yes. So the table shows some properties of different elements. Which element is most likely to be a transition metal? You can see this. But the transition metal should have high densities. So this should be the right answer. This should be the right answer. They are good electrical conductors. So you can see this, they are right. And if you talk about the melting point, so which one is right? B or D? B, sir. B. B. Totally B. Super This B. would be right. Got it, bacho? Yes Yes, sir. Yes, sir. Then a metal X in a group 1 of the periodic table would be expected to what? What is the right answer? But show the right answer would be D, which is a basic chemical property of group 1 metals. We know that whenever they dissolve in water, they definitely react with water and give you what? Hydroxides and hydrogen gas, right? Yes right. This is the basic property that we learn about group 1, and we also watched the video about that, right? Element Q is in the period 3 of the periodic table. It can form ions with the formula Q-3. This is very important, Q-3, which shows group number 5.
which element is most likely to be Q? This is period 3, yani Aluminium. raw 1, raw 2, raw 3. This is raw 3 and group number 5, so it should be 8, 7, 6, 5. So here somewhere. So ये होगा आपके पास phosphorus. क्या होना चाहिए बच्चों ये? Phosphorus. Right बच्चों? Yes, sir. और एल्युमिनियम बोलने वाले बच्चे ये गलती हमेशा करते हैं. याद रखिए एल्युमिनियम ग्रुप 3 का, it should be +3 not -3. Right? Yes, sir. Then we have which set of electronic structures are only found in metals. We know that in the last shell of metals, it should be 1 electron, 2 electrons, or 3 electrons maximum. Right? So you can see this. This is 6, 7. So this is not right. 7. This is not right. 5. This is not right. The right answer is A because they have valence electrons 1, 1, and 1. Right, Bacho? Yes, sir. So these are very simple MCQs and very easy to solve, and I love these MCQs to solve. So we have a lot of MCQs. I am giving you some homework about this. So just take a pictures. बच्चों जल्दी से pictures लेंगे. ये आपके पास हैं कुछ MCQs जो कि आपने solve करने हैं. जल्दी से इसकी picture ले लीजिए. Just take a screenshot of this. Done? Yes, sir. Done, sir. चलें इसकी भी लीजिए जल्दी से. Done? Yes, sir. चलिए इसकी भी लीजिए. इसकी भी लीजिए जल्दी से. 30 MCQs तो एटलीस्ट हमें करने हैं, यानी कि 9 मैंने करा दिए, 21 आप कर सकते हैं. It is 26 and now it is going to be 29. And this is the last one. This is the last one. आप में से अगर कोई इसको पूरा करना चाहता है तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं रोक सकता. सर सॉरी, एक दफा पीछे जा सकते हैं? वो बेटा किसी ने खींच ली होगी ना, वो ग्रुप में डाल देगा. डोंट वरी अबाउट दैट. ग्रुप में वो ऐड ले ली हम. सही. तो ये लास्ट पिक्चर है, ये ले लो. अगर आप लोगों को 30 तक करना है आप लोग 30 तक कर सकते हैं, और जिसको ज्यादा करना है वो 33 तक भी कर सकता है अगर उसको शौक आ रहा है तो. राइट एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Right, sir. और जिसने प्रॉपर्ली इसकी पिक्चर्स ले ली हैं, काइंडली वो बाकियों के लिए हेल्पफुल